spirituality, tranquility, peace, and definitely bliss. Art of Living is one of the largest volunteer-driven non-government organization across the world. It's an educational and an humanitarian organization which practices stress management through meditation and the Sudarshan Kriya, which is said to be USP of this particular group of meditation. It also undertakes a range of social and environmental welfare projects and is operational in around 185 nations, and the organization has impacted lives of more than 500 people worldwide. So words are completely insufficient for us to describe the kind of event that we may host today. I would request all of you to kindly get seated so that we are able to start the Art of Living, some games and practices which would actually help you to get in sync with the vibrations that will be spread over here. With great pleasure, I extend a warm greeting for the entire team of Gurudev Shri Ravishankar ji at All India Institute of Medical Sciences. I look forward that we have an excellent interaction with the team, and we are really motivated and blessed with the thoughts of Guruji. Without further ado, let me hand over the stage to Mrs. Kirti and Aditya ji, who would be playing games and who would be including you and would be taking you through a great ride of events of fun and finally peace and bliss. Thank you. Namaste and good evening to everybody. On behalf of the Art of Living, I welcome you all to this most amazing and unforgettable evening we have organized for you. The mission of Gurudev Shri Ravishankar ji is to bring a smile on every face, and let's bring a smile on every face present here. I welcome Aditya, who is going to be here with us in this evening. Hello everyone, Namaste. How are you all? This is not like AIMS. Let me ask you again. How are you all? Can I have little more enthusiasm? How are you all doing? Okay, this sounds better little. But still I think there are back ventures. You know, I still, you are in the one of the most prestigious colleges, institutions of the India. So I would expect little more participation from all of you. Okay, so would you like to play a game? Only I'm hearing from this side. Would you like to play a game? Yes. Can I have yes from everyone? Yes. Would you like to play a game? Yes. Okay. So let's all quickly stand up. Wow, very nice. Yes. Sit down. सब बच्चे बन गए. Everybody has become a kid. So this is what Art of Living is actually. Right? Quickly stand up again. I know you have been from the hectic schedule of classes, teaching, faculty members, right? But still. Quickly sit down. Very nice. So this was not actually the game, right? This was just to bring you here and make you more little active. So I would request now, one of our amazing Art of Living teacher, Mr. Sumit Kalra. He's a faculty at IIT Jodhpur, graduate from IIT Kanpur. He'll help us, he'll guide us through some games. Hello everyone. Gives me thumbs up if you all are good.
Some people are still not good. So you are at right place. You are in AIMS Jodhpur. You can get treatment. Okay. Again, thumbs up if you are good. Nice. Okay. So, my colleague introduced me, I am Art of Living teacher for kids and teenagers. And I can see it's a mismatch here. The audience is not kids and teenagers. So, you'll see how even Art of Living can impact teenagers' mind also. People generally, parents keep asking us question, how we can keep kids and teenagers engaged for 6 hours in a day. So we'll look at that, how we'll do. And one more thing, it's not only about teenagers and kids. It's all about us also, because we have also lost the power of concentration. Today, it's all about, reels generation. We look at the reels for less than 1 minute, and if we don't find it suitable, we change the reel. And it's happening same in classes also. If students don't find the faculty good enough, within 1 minute, change the faculty. and then they go into WhatsApp mode or something. Anyways, so we have to clap. I hope all of you know how to clap. Can you show how we clap? Wow. Nice. Okay. So here is a small challenge for all of you. Whenever I say start, you have to start the clap. And whenever I say stop, you have to stop the clapping. Right? And while you are clapping or not clapping, and you are listening to me, you are also paying attention to your neighbor, whether they are doing it correctly or not. Fine? So we are not putting judges for you. Your neighbors are going to overlook for you. So let's start the game. Wow. Okay. Stop. Start. Stop. Start. Is your neighbor playing? Look around. Stop. Start. Stop. Start. Start. So game will continue until I say stop. He already said stop. I already said stop. And so once I start calling Aditya, and he responded me that today is the event in AIMS Jodhpur, and I should stop lecturing in IIT Jodhpur and come here and start my lecture in AIMS Jodhpur. And when I came here, I started lecturing and start. Very good. Okay, stop. But game has not ended yet. Okay? Game will keep continue as we started. Very nice. So I think backbenchers are there. They also now started clapping. Okay. So we can stop now. And just look at the focus of your mind. It has suddenly your concentration, your attention period has, you will see the difference in you right now. Okay? How many of you have started feeling the difference? Wow, all of you. Very nice. Okay. Shall we continue the game, or shall we stop? Okay, we should continue the game. Okay. Anyway, so it's officially ending the game. Thank you. Maybe if anybody says start at this stage, don't. Thank you. And disclaimer is there.
if someone next person who is going to speak to you, if they say start but don't start. Fine, okay. Let's have another interesting game which involves your connectivity to your neighbors. Fine? All of you are ready to play? Yeah. It will be a raw game. Whether you are faculty or staff, you can also participate. There's no age bar as such. All are welcome. So it's a Morse typing game. All of us know Morse code. At least engineers know Morse code. So what you need to do, we'll be giving you one number of 3 digits. You need to pass that number to your neighbor with the help of tapping only. How to tap? Say I receive the number, say 413. I'll tap 4, 1 and 3. Now this person will pass the Morse code to the next person. So first number you can type on the top of shoulder, then second near elbow and third near wrist. Fine? And we'll see how your Morse code has transferred to your end of the row. Fine? So all of you are ready? All of you are ready to start the game? Yes. Start the game. Okay. So numbers are there and you are not allowed to speak out that number. So let's maintain that level of small honesty. So where will you find that number? So Yeah. all the in each row, the right side corner chair right, you have one note, a folded note towards your side. Can So, volunteers just help? So like this column will have number on their chairs. Yes. And if you are unable to find number, our volunteers are standing in between. You can just raise your hand. They will help you with the number. How many have found the number? Can you raise your hand if you have found the number? Okay. The right corner. You have found? How many of you have not found the number? No, only the corner chair will find. And then they will transfer that Morse code. Those who have not got the number can ask your number from volunteers. Volunteers, please raise your hand. Yes. So locate your nearest volunteer and please help the corner people, giving them one number of 3 digits. And when we will say start, we will start transferring this Morse code. Fine? So if you have found the number, you can start the game, okay? And if you have not understood the game, you can ask again. You can just raise your hand and we can explain you. So where is the Morse code right now? Can you raise your hand? Who has started and reached to the end of the row? Okay, many of you are at the beginning of your row. I can see some Morse codes are being transferred, but not all Morse code. We need all Morse code to be transferred to other end. And once you transfer the Morse code to other end of the row, the first one should verify whether the right code has been transferred or not. Which row has completed so far? The complete row, raise your hand. Wow, backbenchers are much ahead. Very nice.
How many of you are not transferring the Morse code? Front benchers, you have not got the Morse code? Ask the corner person. You think of a number and then you start transferring the Morse code. If you have not find any number on your chair, please think of a number and transfer the Morse code. Oh, come on, you should not do cheating. Some rows are transferring the slip itself. Look at the state of. Anyways. Okay, so let's start the previous game. Nice. And this clap you have started for yourself, who have participated with your 100% enthusiasm. And you can see the clap game is still going on. And you can see the most sound is coming from where the people have participated more. Wow. So we can stop here. Okay. There's another quick thing I would like to do experiment with all of you. You have to listen me carefully, that's all. Nothing else is required. All of you are with me? You have to just listen me carefully. After that I will ask something, you have to answer, that's all. So what happened on one fine day, I was on morning walk, and during my morning walk I came across a tree in Rajasthan desert area which was having lots of fruits, and I have never seen that fruit in my life earlier. I used Google Lens to find out the name of the fruit, and that fruit known as jackfruit. Have you seen the jackfruit or dragon fruit? So that was the fruit. And the moment I started having that fruit out of curiosity, I found myself not in Jodhpur but in Bikaner. And on the way to Bikaner, I came across an interesting place called Deshnok, where we have world famous temple where there are lots of mice. And after going from Jodhpur to Deshnok to Bikaner, once I reached Bikaner, I found that my good friend Gurudev was waiting there. Now, Gurudev started taking my journey ahead. Gurudev, over to you. Okay, you can clap for me. अच्छा, एम्स में इतना ही जोश है क्या? Let's see. क्या ये रो इस रो से बेटर है? I guess ये रो ज़्यादा बेटर कर पाएगी. अच्छा, ये रो तो साथ में हुटिंग भी कर सकती है. अभी ये लोग फील फ्री नहीं है ना, इनको अच्छा नहीं लगा. आप भी हुटिंग कर सकते क्लैप के साथ. ये थोड़ा ये ज़्यादा हो गया इनका. दैट्स गुड. अच्छा, आप लोग So how are you all? Are you all ready for the next game? अच्छा ठीक है, जो लोगों ने यस बोला फिर उनके साथ खेलेंगे. बाकी सब लोग, Are you all ready? Yes. Okay. So I continue this journey with my other friend. तो हम लोग यहाँ से बीकानेर गए. बीकानेर से जब वापस आ रहे थे, रास्ते में हमारा मन हो गया तनोट माता जाने का. तो वी वेंट टू जैसलमेर. जैसलमेर में मैंने रुक के प्रसाद खाया. प्रसाद के अंदर 2 लड्डू थे, 4 पताशे थे. एंड देन आई अगेन वॉक. जब वहाँ से निकलना चालू है तो बस में मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला जिसने मेरे साथ चिप्स शेयर की. फिर हम लोग जब जोधपुर में पहुंचे तो जोधपुर का एक फेमस स्नैक है, क्या? पीछे वाले लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं. मिर्ची बड़ा. तो मिर्ची बड़ा अकेला तो नहीं आता है, तो साथ में आती कचौरी. यस. तो अभी आप सब लोगों के लिए गेम ये है, द ट्रिक इज
मैं कितनी जगह पे घूमा और मैंने कितनी जगह पे खाना खाया, क्या क्या खाया, तो ये आपको बताना है. सो एनीबॉडी? सो द ट्रिक इज, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई, आपको मेरे को बस उतना बताना है कि मैं कितनी जगहों पे गया और मैंने क्या क्या खाया. दिस इज टॉर्चर, है ना. 4 बजे आप क्लास खत्म करवाने के बाद यहाँ बैठाते हो, अच्छी अच्छी डिशेस का नाम ले रहे हो और फिर के काउंटिंग भी करो. दिस इज रियली टॉर्चर. डू यू एग्री विद मी? सी, फिर भी करना पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस, राइट? अच्छा, कौन है जिसको 5 चीजें पता है? चलो रेज योर हैंड. 5 जगहों पे गया. ओके, लास्ट डे ना. हाँ, आपने हाँ बोलिए. यस, देशमुख करेक्ट, जैसलमेर करेक्ट, तनोट माता करेक्ट, करेक्ट. क्लैप फॉर हर एवरीबॉडी. अच्छा, आपको ये बता दे मैंने क्या क्या खाया था. लड्डू, बतासे, ऐसे नहीं, कोई एक हाथ करके. यस, लड्डू कितने? वेरी गुड. बताशे 4 करेक्ट, चिप्स करेक्ट, मिर्ची वड़ा सिर्फ, कचौरी. चलिए, तो यानी हाँ जी, जैक फ्रूट वो तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है. चलिए, सो लेट्स ऑल वेलकम अनदर फ्रेंड पुनीत. थैंक यू जी. तो एक और गेम खेलते हैं हम, है ना. तो अभी ये थोड़ा काउंटिंग वाला गेम है. विच साइड ऑफ द ब्रेन वर्क मोर इन दिस गेम? टेल मी. हाँ, सम ऑफ यू आर लाइक सेइंग इट करेक्ट. प्लीज से इट लाउड. लेफ्ट ब्रेन, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. थोड़ा सा राइट वाले को भी करे क्या यूज? यस और नो? व्हाट इज राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर? इमोशंस. ओके, क्रिएटिविटी, है ना. सो लेट्स बी अ लिटिल क्रिएटिव. होना चाहिए, हाँ कि ना? ठीक है. एक्चुअली आई एम अ टीचर, सो आई नीड कांस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस. सो शुड वी स्टार्ट द गेम? सो you all know yourselves, right? You know yourselves. Yes or no? Fine. So you have to introduce yourself to a friend sitting next to you. Can you all do that? But there's a proper method to it. There are some rules which I am giving you. Are you ready to listen to me? I'll just tell them only one time. So all ears here. है ना, आपस में बातें नहीं करना. तो पहला क्या तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का? जस्ट लाइक माई नेम इज पुनीत, तो मेरा इनिशियल क्या है? पी. सो यू हैव टू ऐड एन एडजेक्टिव एज अ प्रीफिक्स टू द नेम. जैसे पुनीत है तो आई लुक वेरी पीसफुल, है ना, इन वाइट कुर्ता सी. सो पीसफुल पुनीत, दिस इज एन एग्जाम्पल, है ना. तो ऐसा. तो फर्स्ट तरीका ये है, वैसे आपको करना है. अभी रुकिए, अभी नहीं करना, अभी इधर सुनिए. सेकंड, यू हैव टू टेल वन लाइन अबाउट योरसेल्फ that you feel great about yourselves. Like for example, I can say I make great pizzas. There is some specialty. जो आपके बारे में एक स्पेशलिटी है, वो सेकंड लाइन में डालनी है. Yes or no? Understood? मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, देखो पीछे वो, है ना. Okay, but still you'll have to do it. No choice, right? And the third category, देखो दोनों चीजों से बनते हैं ना हम लोग, अच्छी भी चीजें बुरी भी चीजें. तो you have to share 1 lack, या फिर आपका कोई एक जो कमी है या ऐसा कुछ है, या नेगेटिव क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं, but in a very creative and a positive manner. For example, if I say I'm lazy, but I won't say it like that I'm lazy, I will say it like I'm a very effective procrastinator. So there are 3 categories, है ना. वो 3 तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है to the person sitting on the left side of you. आपके लेफ्ट में जो भी है उसके साथ में शेयर करना है. ऐसा कर सकते हैं क्या? हो पाएगा क्या ऐसा? सब लोग कर पाएंगे क्या? कैसे हो पाएगा? चलिए ठीक है, कीजिए. So your time starts now. The first category is
Add an adjective in front of your name. The second one is, what is second? One quality. One amazing thing about you. And the third one is a negative thing in a positive manner. Start. आपके बारे में ही बताना है, देखो शेयर कीजिए आप भी. And we'll listen to the amazing answers. If you get any amazing answer from your partner, you can share that. ये अच्छा था. Are you all sharing? देखो हम में से कुछ लोग है ना बड़े स्पेशल है, हमसे कोई पूछेगा तो जवाब देंगे, तो डोंट डू दैट. अपने आप से शेयर करना प्लीज. Gaurav, why don't you share about yourself? Okay, so I am graceful Gaurav, and I am very good at eating. Who make good pizzas, I will eat very good. And I am very effectively sleeping all day. Okay. So we'll take one of them now. Did you get amazing answers? Can you share some of them? Here, can you share some of them? किसी को एकदम मस्त ऐसा आंसर मिलेगा, अरे यार ये मस्त बोला एकदम. Anyone? Anyone in the audience? At the back? कोई आंसर नहीं मिला ढंग का? You are not creative guys? You use your left brain more? Okay, no issues. ओके. सो देखो बड़ा अच्छा लगता है जब हम आसपास के लोगों से वो बात करते हैं जो कभी बात की नहीं है. आज तक अपनी तारीफें दूसरों से सुनना चाहते थे, आज खुद कर रहे हैं, और फिर अपनी वो कमियां भी बड़ी तारीफ करने के चक्कर में सुना रहे हैं. राइट. तो ये सब में क्या हो गया, अभी हमारा माइंड बड़ा रिलैक्स हो गया. वी आर चिल. राइट. सो नाउ मैं आपको स्क्रीन पे, अच्छा सब लोग ध्यान से सुनना है, इसमें विनर भी है, विनर को गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो ये ध्यान से सुनना. आपको स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड के लिए एक इमेज दिखाई जाएगी, एंड देन यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स टू रिमाइंड ऑल दोज थिंग्स. फिर हम आपसे पूछेंगे उस इमेज में कितने ऑब्जेक्ट्स थे, तो जो सबसे ज्यादा बताएगा वो जीत जाएगा. ओके. सो वी हैव आवर फर्स्ट इमेज. ओके स्टॉप. हाँ जी. ओके नाउ हु हैज 20 आंसर्स? 20. ओके. बट आप लोग हाथ कर 20 तो थे भी नहीं. हाँ जी. अच्छा, वी वांट टू गिव पॉजिटिव इनपुट टू, और भी है हमारे मन में जो भी सुनाएंगे हम लोग. ओके, एनीबडी? चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 20. नोबडी 20? 18? 15? अच्छा 15 भी नहीं आते. 12? हाँ, कब गलत बोलेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे. 10? So you want one? हाँ, कोई है? At the 10 back, वाला I think. The one waving the hand. Yes. चीटिंग हो रही है वैसे. ओके, किसी को तो मिले प्राइज. ओके, 1 रेडी. एक और बता दूं फिर जिता दूंगा आपको. वॉच. ओके, क्लैप फॉर एवरीबॉडी, क्लैप फॉर. तो अभी आपको लगता है ना आप और बेटर कर सकते थे? यस, नो?
So we'll have one more picture for you. चलिए, next picture please. And stop. Okay. Let's start with 15. Anybody with 15? Okay, yes. Watermelon, okay. Lemon. Coconut, okay. Cherries. Okay, oranges. Banana, Okay. capsicum, अभी जो भी सब्जियों के नाम याद आ रहे हैं सब याद करो. capsicum, tomato, Yes. One more left. कीवी. अच्छा ये सब साथ देने लगे हैं उसका. Okay. So what's your name, ma'am? Shivani. Clap for Shivani, everybody. एकदम अभी से ही वो संग छत्वम, लेट्स ऑल वॉक टुगेदर, वो वाला वहां पे. So okay. So Shivani and आपका क्या नाम था जो उससे पहले जवाब दिया था? टेडी बियर. मेरे को आपका नाम फिर सिर्फ टेडी बियर से याद रहेगा. Aditi. Okay, Aditi and Shivani are the winners of this game. आप ही गेम्स के लोग हैं, प्लीज अच्छे से तालियां बजा लीजिए. So you know this is really very beautiful opportunity that आज हम लोग गुरुदेव को सुनने वाले हैं. But before that, आर्ट ऑफ लिविंग ने क्या देश भर में, दुनिया भर में कार्य किया है, गुरुदेव का जो भी विजन है वो हम सब लोग एक वीडियो के साथ शेयर करेंगे. So video. So we're going to play a video. So once again, on behalf of the Art of Living, I wish to extend a warm and heartfelt welcome to one and all one more time. Founded by the revered humanitarian and thought leader Gurudev Sri Ravishankar ji in 1981, the Art of Living has been dedicated to fostering peace and well-being across communities globally. The stress elimination programs and service initiatives undertaken by the Art of Living have not only touched countless lives but also aligned with the guiding principles of medical fraternity, service before self. Both the Art of Living and the medical profession share a common commitment to serving humanity. Just as medical professionals tirelessly devote themselves to the well-being of individuals, the Art of Living family too has been dedicated to uplifting communities through various humanitarian projects. Just like you, we too are dedicated to providing relief from suffering and promoting holistic health, highlighting the impact of selfless service on society's well-being. So here's to Love Moves the World.
where the world is torn between aggression and depression, a child was born who at the age of 4 astonished his teachers by reciting the Bhagavad Gita. From a young age, he was found in deep meditation. He would say, "I have family everywhere. People are waiting for me." After completing his education, he began traveling the world, reviving ancient knowledge and imparting spiritual wisdom. And then, in the winter of 1981, in a place called Shimoga, he went into a period of silence, during which the Sudarshan Kriya was revealed to him, the most powerful breathing technique that relieves stress and creates emotional, mental, and physical well-being. What prompted you to start your own mission? I didn't plan anything as such. I just took 10 days of silence and afterwards kept teaching what I grasped. Gurudev began traveling across the world, teaching this knowledge, and so the art of living was born. Under his guidance, the organization has grown to have its presence in 180 countries, with over 35,000 teachers who have spread the benefits of Sudarshan Kriya to millions across the globe. He has designed 57 unique programs that cater to every section of society. When I did Sudarshan Kriya for the very first time, it was so powerful, and I felt like my brain and my eyes are just clear. It's like there was so much written on the blackboard, and when you just wipe it off. I can feel like my whole nervous system just resetting. I can feel a calm and a peace. The only thing I'm proud of, I have very dedicated, committed volunteers all over the world. They carry on the work. His programs have not just created inner well-being and peace, it has empowered hundreds and thousands of volunteers to make the world a better place. At the age of 24, with what began as Gurudev taking responsibility for the education and care of 180 children, has grown into over 1,200 free schools, educating over 100,000 children, many of whom are first-generation learners in the remotest parts of India. Earlier in my life, I did not have food to eat or proper clothes to wear. But this second chance that I have got has made me capable of taking care of my entire family. Gurudev founded the Rural Development Program to empower rural communities globally. Volunteers have created 1,000 model villages in India, providing electricity through solar power in over 90,000 homes. The Youth Leadership Training Program has transformed rural youth from across the globe into leaders of social and economic change. I was a heavy smoker, drink like a fish, but now, just take that. On a mission to conserve the environment, the art of living has revived rivers and water bodies throughout India, providing relief to many drought-hit areas. This region had no drinking water at all. Now it is there in abundance. This river rejuvenation initiative that we have taken up in Maharashtra has been successfully executed by the Art of Living under Gurudev's guidance. Tree plantation and cleanliness drives have helped create a greener planet. Natural farming programs have made farmers across India, especially those in suicide-prone districts, debt-free and self-reliant. Gurudev, by taking up so many initiatives for farmers, you have brought happiness back to our lives. I am very, very grateful to you for this. Dear Gurudev, if it hadn't been for you and your teachings, my life would look much different than it does today. It's incredible that you were able to get through to a bunch of people who essentially believed in violence only. If you see through my eyes, I don't see any bad people per se on earth. The people whom we call as culprits of heinous crimes, there is a victim crying for help inside of them. Art of Living's prison program has transformed the lives of over 800,000 prisoners world over. I used to actually look forward to fights, but now since doing this course, I'm a total different person.
I can now walk away from a fight. I also have started to believe in myself that I have an impact in passing on and in doing service. And Guruji, I want to thank you so much for your love. Thank you so much. The Yes for Schools program in the United States has saved many at-risk inner-city youth from a life of crime. I lost my sister, I lost my grandma, I lost my great-grandpa, and I didn't know how to deal with my stress. But since the yoga classes started to help me, and I don't feel much about it anymore because I feel happy, like they're in a better place now. We spent 16 months on the ground. We were actually the longest unit to serve in Iraq. Well, I came back injured. I really had no support of any family or anything. I felt alone. And you come back and you have a hard time reattaching to normal civilian life. Project Welcome Home Troops has helped war veterans by healing the unseen wounds of war. 94% of these veterans reported increased levels of peace and decreased stress and anxiety. Just on a practical level, I sleep at night, and I don't have to take a handful of meds to do it. And that's where this program really probably helped me more than anything, is it kind of gave me myself back. When you see that light come back in their eyes, or you see them resting within themselves for the first time, it's the most rewarding thing that any teacher could ever want. Whether man-made disasters or natural calamities, Art of Living's vast global network is one of the first groups to respond with relief efforts. How do you feel, the guru of love and compassion, when you hear the news of the pain in the world today and the atrocities that we witness every single day? When I consider the whole world as one family, any trouble anywhere definitely pains. Instead of sitting and brooding over it, I jump into action. In the longest running dispute and a divisive one at that, Mandir Masjid case has finally come to an end in the apex court. Gurudev resolved the 500-year-old Ram Mandir Babri Masjid dispute through decades of community outreach and dialogue. His mediation efforts resulted in an amicable solution that was welcomed by both the Hindu and Muslim communities. All our hopes are with him, because he's such a person who does not want to see anyone hurt. Gurudev does not belong to one religion. He is a messenger of peace. Nobody can ever doubt his intention. ये जो काम हुआ है, ये बहुत लोगों के sacrifice के ऊपर खड़ी है. इसका पूरा credit भारत को मिलना है ये. In an effort to restore peace in the Kashmir Valley, Gurudev has brought together all stakeholders through trust-enhancing initiatives, dialogue, and development projects. We had been taught to operate guns, arms, and train other youths. But now, after doing the Art of Living course, meeting Sri Sri, we realized we had chosen the wrong path. After his intervention, thousands of militants in northeast India laid down their weapons and chose the path of non-violence. My life got a new turning point because of Gurudev. He made me realize weapons will not bring independence for our community. Many other groups who have understood that there are people to care for them. There are people who are ready to listen to them. And we will not stop till the last gun is laid down in the region. This June 23rd will be an important day in Colombian history. Gurudev's effort led to the end of a 52-year-old fierce armed conflict between the FARC and the Colombian government. We hope that we Colombians may soon embrace the Gandhian principle of non-violence. We agree with Master Shri Shri Ravishankar. Since 2003, Gurudev has held peace conferences and relief camps in Iraq, Jordan, and Lebanon. When I practiced breathing, I felt so relaxed from inside and outside. I felt like I was flying. The Art of Living has also rehabilitated close to 1,000 Yazidi women who were enslaved by the ISIS in Syria. These girls were raped by the ISIS. I was raped by 2 ISIS members. It was very, very hard to process all this. These sessions really helped all of us to cope with the trauma. For his humanitarian efforts and peace initiatives,
Gurudev has been conferred with numerous awards from around the globe, including the highest civilian award of Colombia, Mongolia, Paraguay, and Suriname. He's also been conferred the Padma Vibhushan, one of India's highest civilian awards, and 25 honorary doctorates globally. The art of living has an incredible following that cuts through all religions, cultures, and backgrounds. A very difficult thing to do in today's world. With a vision of a one-world family, Gurudev gathered people from over 150 countries to celebrate the first World Culture Festival in Bangalore. In Berlin, where the Second World War was declared, the festival brought together thousands from across the globe to celebrate unity in diversity. In Delhi in 2016, the festival brought together over 3.75 million people from 155 countries, with spectacular performances by 36,602 artists on a breathtaking 7-acre stage, the size of 6 football fields. In 2023, the 4th edition of the festival saw 1.1 million people from 180 countries gather on the National Mall in Washington, D.C. The Art of Living has hosted historic events leading to multiple Guinness World Records. His vision for the world is to see a smile on every face and create a stress-free, violence-free society. We gather today in this wonderful occasion, blessed by our Master of Love. If you can have the spiritual force of Sri Sri Ravishankar ji, then we have a beautiful world. If there's one country in the world that has to be in total gratitude with you, it's mine. The voice of peace, the voice of truth, it should be heard loud and clear. In an era. So as we await Gurudev's arrival, he'll be here any moment now. Let's experience a breathing technique. Did you all enjoy the video? Yes? Okay. So this is called Bhastrika, or we also call it instant coffee breathing technique, okay? So you all want to feel awake and listen to Gurudev full attentively? Yes? Okay. So what do we do is, you can watch Kirti Didi, right? So before we do that breathing technique, let's just shake our hands, okay? Jhaad lo sab kuch. All the tensions, worries. Left. Little faster, faster. With a smile. You know, all the animals, right, they don't let anything remain. If you have seen cats and dogs, right, we need to learn from them. So we just shake it off and our emotional, nervous system calms down. You all are doctors, you know much more than me. But this is what I have learned. And relax. Okay. So we'll learn that instant coffee breathing. So what we do is we place our loose fist in front of our shoulders like this. Okay. And first you can see, and then we'll do all together. I know a few people are sitting down, so just be careful you don't hit anyone adjacent to you. So we breathe in with little force and throw our hands up like this. Okay? So we breathe in with force and then breathe out. Okay? We breathe in, breathe out. So you can close your eyes and continue. Out. In, out. In, out. In, out. Keep your eyes closed. Continue. In, out.
In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in and relax. Keep your eyes closed, relax your hands. Keep your palms open to the sky. Welcome again to this auspicious gathering as we prepare to delve into the realms of spiritual wisdom with a revered luminary. Today's event is a convergence of hearts and minds seeking insights into the profound connection between spirituality and well-being. We are privileged to have Gurudev, Sri Ravishankar, distinguished spiritual leader, humanitarian, founder of the Art of Living Foundation, guide us on this journey of self-discovery and enlightenment. Today we have the privilege of witnessing the confluence of leadership and spirituality as Dr. Agrawal, our beloved President, and Dr. Kar, our Executive Director, would honor Gurudev for his invaluable contributions to the spiritual and humanitarian landscape. Thank you, sir. I request our Executive Director to kindly felicitate Gurudev with a shawl. Thank you, sir. Now, I request our President to share his thoughts on this momentous occasion. Before that, our Executive Director, Dr. Madhavan Nandakar, would deliver the welcome address to Gurudev and the gathering. Let's see. Dear esteemed guests, dignitaries, dear students, invited delegates, it is with great joy that Sri Ravishankar ji is with us, and it is an honor. This is a privilege. This AIMS Jodhpur is hosting Gurudev ji, who is everyone knows that Sri Ravishankar ji, Gurudev ji, is in spiritual world, a spiritual luminary, enlightened soul, who is all over the world at spread and enlightened so many. And we are fortunate that he is among us today, and with his spiritual deliberations, enlightenment, we will maybe enlightened with his realization, related words, spiritual discourse. This everyone here will be enlightened with your spiritual discourse. I'll not take much time. Now I welcome Sri Ravishankar Gurudev ji here, and thank you all, everyone who is here. Thank you, sir. I request the President of the Institute, Dr. Agrawal, to share his thoughts. Sir, please kindly come on the stage.
नमस्कार, वंदे मातरम। आदरणीय गुरुदेव, उपस्थित सभी देवी देवियों, सज्जनों, मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स माधवानंद जी, फैकल्टी और यहाँ सभी बैठे हुए छात्र छात्राओं, परम आदरणीय श्री रविशंकर गुरुदेव जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, एक आध्यात्मिक गुरु, मानवतावादी और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर शांति, कल्याण और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। गुरुदेव की शिक्षाओं में ध्यान, योग और श्वास तकनीक प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। उनकी दृष्टि इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्तिगत परिवर्तन और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त दुनिया प्राप्त की जा सकती है। गुरुदेव ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्षों की मध्यस्थता और संवाद को बढ़ावा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अहिंसा और खुले वातावरण के महत्व पर जोर दिया है। उनके प्रयासों ने उन्हें मान्यता और पुरस्कार अर्जित किए हैं, और जिसमें कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में एक है, पद्म विभूषण से भी आप सुशोभित किए गए हैं। अपने आध्यात्मिक और मानवीय प्रयासों से परे आदरणीय गुरुदेव रविशंकर जी एक लोकप्रिय वक्ता हैं, जो व्यक्तिगत विकास से लेकर वैश्विक शांति के विषयों पर विविध दर्शकों को संबोधित करते रहे हैं। इनकी शिक्षाएं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे उन्हें एक प्रिय व्यक्ति और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों ने प्रेरणा का स्रोत माना है। आपकी जानकारी के लिए मैं एम्स जोधपुर हैज मेड ए मार्क इन वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम इन इट्स एग्जिस्टिंग 11 years, being ranked 13 in the NIRF ranking in 2003 among all medical colleges in the country, and it is second after AIIMS Delhi in choice of students for education and people's choice for treatment of patients. We are making new milestones in the field of academics, research, patient care and public health. मैं यहाँ उपस्थित जनसमूह को ये जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आदरणीय गुरुदेव द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जीवन जीने की कला, यानी आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला, जिससे शांति, सद्भाव, परस्पर प्रेम भाव, एक दूसरे का सम्मान, यानी आपस में विश्वास, ट्रस्ट का निर्माण करवाया है। और आप इन विषयों को पूरे संसार में, विशेषकर भारतवर्ष में विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रहे हैं। आपका ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भारतवर्ष को वैभव राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने में बहुत बहुत सहायक होगा। इससे अब हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहा है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आवर कंट्री रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा and other pathies also. But this Ayush system of medicine for health care alongside modern biomedicine
each medical system has its advantage and limitations. Integration involves combining best of all systems of medicine in the best interest of the healing of a patient, and this can help in amalgamate the benefit and culture the disadvantage of individual medical system. The process of integrative healthcare involves genetic evidence through research, train manpower in deliver clinical services, and there is a pressing need of these integrative healthcare center in the country. और आप लोगों को मालूम होगा कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा स्टैंड है कि हम इस प्रकार के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको हम रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करें, और एम्स जोधपुर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. आज हम आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी के सानिध्य में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ के रिसर्च विंग के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च और एम्स जोधपुर द्वारा एंशिएंट होलिस्टिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग योग, प्राणायाम, meditation, Vedic chanting and practice with ultimate aim to improve the quality of life पर MOU बना है. एम्स जोधपुर इसी वर्ष आपकी जानकारी में 13 जनवरी को प्रथम अनुसंधान दिवस सेलिब्रेट किया है अपना स्वयं का, और जिससे हमने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहते हैं. हम अनेक नवाचार कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे 200 से ज़्यादा इस टाइम रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके साथ ही हम IIT जोधपुर के साथ मिलकर एक बायोमेडिकल क्षेत्र में नया अध्याय भी लिख रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर. एम्स जोधपुर 2 फंडामेंटल हैं जिसके ऊपर काम करता है, टीच और ट्रस्ट. टीच का मतलब है टीम वर्क, एक्सलेंट, ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी एंड हम्बलनेस, और ट्रस्ट है ट्रांसपेरेंसी, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड टीम वर्क. टीम वर्क दोनों में काम है, और जब तक टीच और कॉमन वर्ल्ड जो टीम वर्क है, हम आर्ट ऑफ लिविंग तथा एम्स जोधपुर एक टीम वर्क की भावना के साथ काम करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिने का हमारा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे. एक बार फिर मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और एम्स जोधपुर के प्रांगण में उनका अभिनंदन व स्वागत करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Before we begin this transformative experience, I kindly request everyone to silence their mobile phones. And without further ado, let's welcome Gurudev with open hearts and eager minds. What a lovely evening. सीधा अयोध्या से आ रहे हैं हम यहाँ. तो एक बार जय श्री राम का नारा लग जाए. जय श्री राम. 500 साल की इंतजार के बाद वो घड़ी कल आई. देश भर में ऐसा उत्साह, गली गली में, गांव गांव में एक इमोशनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर रहा. क्या ये हम अपना मूल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अपना संस्कृति को, अपना विरासत को? सभी धर्म के लोग इकट्ठे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट किए थे. तो उसकी बधाई आप सबको भी.
अब डॉक्टर्स की जब बात है, मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे एरिया में 2 डॉक्टर हुआ करते थे। एक तो एमबीबीएस का पूरा बोर्ड स्पेशलिस्ट, एमडी एमबीबीएस, उन दिनों में फॉरेन रिटर्न लिखते थे, अभी भी लिखते हैं कि नहीं, एफसीआर एफआरसीपी, फॉरेन रिटर्न। और दूसरे एक डॉक्टर थे जो काम, उन दिनों में क्या था, एक एलएमपी होती थी, आजकल वो तो अबालिश हो गया, क्या आरएमपी, एलएमपी हुआ करता था। ये जब किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर के काम करते थे, बाद में वो एक छोटा सा कुछ एग्जाम दे के फिर वो डॉक्टर बन जाते थे। पहले तो कंपाउंड, और उनकी जो उनके ऑफिस दफ्तर में घुसो तो इतने सारे रंग रंगीन बॉटल होती थी, एक पीला, एक ऑल सिरप, पीला सिरप, लाल सिरप, वो सब पिंक कलर की। तो जो भी पेशेंट जाते थे वो खुद ही मिक्स करके वो दवा देते थे। मैं बताऊं आपको, ज़्यादा लोग एलएमपी डॉक्टर के पास जाते, उनके यहाँ भीड़ लगती थी। ये और क्यों? उनके चेहरे में स्माइल होता था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, लोग कहते थे इनके पास जाओ तो हमारा सब ठीक हो जाता। एक विश्वास बन चुका था। उस दिनों में कहते थे इनका हस्तगुण अच्छा है, मैंने ये जिस जो चीज़ देते हैं हम वो करते वो ठीक हो जाता। तो इसलिए डॉक्टर के साथ 2 एस होनी चाहिए, एक स्टेथोस्कोप, एक स्माइल। What is the sign of a doctor? Of course, white coat तो होता, white dress तो आप पहनते ही हो, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर का। अभी भी प्रैक्टिस, अब स्टूडेंट्स भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमते हो कि नहीं? घूमते हो जब हॉस्पिटल जाते हो तो। स्टेथोस्कोप, 1 yes, another yes is smile. ये 2 आप लोगों में हो तो यू कैन बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर। क्यों? यू हैव, सी, you know 90% of the diseases has some psychosomatic influence on them. मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बताया है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक कमजोर मन को एक मजबूत शरीर नहीं आके ले जा सकता है, मगर एक मजबूत मन को कमजोर शरीर को भी वो आगे बढ़ा देगा। मन की मजबूती बहुत आवश्यक है, इसलिए मेडिटेशन की जरूरत है। स्वास्थ्य उसी को कहते हैं जब किसके चेहरे में स्माइल हो और जिसमें उत्साह हो, जिसमें खूब शौर्य हो, एनर्जी हो, चुनौती लेने के लिए इतना उनमें उमंग हो, तो उनको कहते हैं ये युवा है, उत्साही है, वो कुछ कर सकते हैं। शरीर की उम्र से उम्र नहीं है, मन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब होता है। सो मेडिसिन इज नॉट जस्ट आइसोलेटेड टू डिजीज, प्लीज डोंट थिंक दैट वे। मेडिकल साइंस मीन्स टू कीप पीपल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ का डेफिनेशन देखो क्या है, पता है ना? यही के हेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं। हेल्थ का डेफिनेशन क्या? फिजिकल हेल्थ, नो डाउट, मेंटल, मैं एक और ऐड कर दूंगा उसमें, बिहेवियरल हेल्थ। हमारे देश के जो आयुर्वेदा जो वो सिस्टम रहा, उसमें बिहेवियरल इज कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ and is connected to doshas in the body. How many of you heard about doshas and behaviors? Can you raise? How many of you have not heard? कितने लोगों ने सुना नहीं इसके बारे में?
हाथ उठाइए। ओह, सुना नहीं। देखिए, एक व्यक्ति को देख के बता सकते हैं इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति का कफ है, मोटा है, उसकी बिहेवियर कैसे होगी, और पित्त प्रकृति वाले का बिहेवियर कैसा होगा, और वात प्रकृति वालों का बिहेवियर कैसा होगा, किस किस घड़ी पे कैसे कैसे ये बिहेव करेंगे, कर सकते हैं, और उसका निदान क्या है, what are the cure for it. Now this has become part of modern medicine today world over. You know, in America, people are becoming very, very fond of Ayurveda and Nadi Pariksha. जितना हमें स्कैनर में जाके पूरा अपना शरीर के बारे में जानना पड़ता है, हम यहाँ से जो नाड़ी वैद्यों को भेजते हैं वो ऐसे पल्स पकड़ के बोल देते कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, तुम्हारा शुगर है, ये तुम्हारा ये है, ये है। Without blood test, they will tell you you have sugar, you have diabetes. So this science of this country was lost. Lost means was ignored. We never attended to that. Similarly, science of meditation. Today there are 600 papers, medical papers on Sudarshan Kriya. Some in AIMS, New Delhi, some abroad, some in Yale University Medical College, all over the world. They have found how the Kriya can change our physiology. हमारे शरीर में क्या असर कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है। प्राणायाम, योगाभ्यास के ऊपर तो hundreds and hundreds of research work has happened. I'm so glad today AIMS Jodhpur has also taken up this. I congratulate the faculty here and the administration, the dean, who have taken keen interest in making this happen. आपको पता है आज दुनिया में nearly 1/3 of the population, 1/3 लोगों को मानसिक बीमारी है, किसी ना किसी तरह से मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, मानसिक बीमारियों से। और statistics goes on and on. Every 40 seconds, one person is committing suicide. We can't let the world go like this. क्या ख्याल है? क्या? Those students in the back, आपके शोल्डर में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है to keep the health of the society. ये जिम्मेदारी आप उठा रहे हो। जैसे आप मेडिकल कोर्स में एनरोल किए हो, रिमेंबर you have taken the responsibility for the wellness, not just curing disease, but make people healthy in the society. As I said, जैसे हमने बताया, हेल्थ में ये भी इंक्लूड है, कोई वायलेंट बिहेव कर रहा है, किसी अटेंशन डिफिशिएंसी है, तो ये सब उसमें आ जाता है। सिर्फ गोलियां खा लेने से डिप्रेशन दूर नहीं होता, ज़रूरी है, मगर थोड़ी देर के बाद वो इफेक्ट करना बंद कर देता है। लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ेगा। इन दैट ये सब हमारे जो विरासत है ये हमारे काम में आ जाता है। आर यू ऑल हियर? देखिए, आप क्लास में बैठते हो, 10 मिनट कोई लेक्चर आपको देते हैं, सुनना पड़ता है। आपको पता है आप वहाँ 3 बार कमरे से बाहर चले जाते हो। यू टेक 3 टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक। अच्छा, कितने लोगों को ये अनुभव है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, मैंने वो वहाँ होते नहीं। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? जो भी टीचर है वो देखिए, आपको पसंद होता है क्या वो? हाँ, इरिटेशन होता है ना, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। घर में भी बात हो रही, घर में भी होता है कि नहीं? अरे हम बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। क्या करें भाई, हमारा माइंड कोई, हमने इतना बम्बार्डमेंट कर दिया अपने मन के ऊपर
इतना स्टिमुलाई होगी तो अटेंशन रहता ही नहीं। एक और मजेदार बात मैं बताऊं, इस बार हम जब यूएस में थे, लंबा टाइम के लिए थे, 4-4.5 महीने थे, तो एक स्कूल विजिट किया। स्कूल में देखा तो कुर्सी की जगह बॉल्स होते ना, जिम में होता है ना जो बॉल, इसमें लेट के बैक एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे बॉल्स रखे हुए थे। मैंने कहा आई थॉट इट्स क्लासरूम, ये तो जिम में ले कहने नहीं। बच्चे जो है ना बड़े रेस्टलेस होते हैं, इसलिए इसमें बिठाते हैं वो। सो व्हेन टीचर इज टॉकिंग द चिल्ड्रन कीप बाउंसिंग ऑन द बॉल बिकॉज द टीचर्स आर अनेबल टू होल्ड द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन even for few minutes. If this is the case, what will happen? 40% of school teachers are depressed in America. Do you know this? Do you know this? 40% school teachers are depressed. अभी वहां से मांग आई है, we want 4,000 teachers who can teach English in American schools for 2 years. Indian, you prefer to have Indian children, Indian teachers. But people don't want to go to school and teach. Because attention deficit. Are you all still there? Yeah. In the back there? I hope I have not lost anybody. Mentally. So, meditation helps you to come to the increase your attention span, helps you to be in the moment. And that is what makes life energetic, harmonious, more beautiful, joyful. जीवन में खुशी की लहर उठनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम तनाव से मुक्त होते हैं। क्या ख्याल है? अरे भाई यस तो नहीं बोल, पीछे पीछे सो तो नहीं कि भाई वहां। So, कई बार आपको होता है, मुझे पता है, क्लास में आप बैठे हुए होते हो, कुछ लेक्चर सुनते सुनते या नींद आ जाती है या अटेंशन नहीं होता है, कहीं और आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर चला जाता है मन, कुछ और, अरे कहाँ जाऊँ आज, क्या करूँ, ये सब बातों में दिमाग घूम जाता है। वो मन को कैसे हम ऐसा करें जिसमें हमारा अटेंशन भी रहे, जो भी हम काम करते हैं उसमें 100% रहे। इसके लिए सीक्रेट क्या है? हम अपने सांस पर ध्यान दें। Our breath has so many secrets to offer to us. That's all I want to say. If you have some questions, I'll take it. Yeah? You have no choice. इस मामले में जो हमको जानता है वो हमसे प्यार में पड़ ही जाता है। जो हमको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कुछ बोलते होंगे, पता नहीं। इसमें कोई चांस छोड़ा ही नहीं मैंने आपको। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो हमने ऑडियंस से कलेक्ट करी है। Oh, yes. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ डू यू ऑलवेज मैनेज टू स्माइल? How do I always manage to smile? How can we have that smiling face always? हाँ, ये भाई कर लो तो। ये हमारा मित्र है, परम मित्र है। If you ask fire, how do you manage to burn all the time? Ask the air, how do you manage to blow all the time? I find this question is very similar. Yes, sir, maybe. It's in my nature. I don't do something extra to do that. And how can we have that, or how can we Just be free from stress. तनाव से मुक्त हो जाओ, सबको अपना मान लो।
और विश्वास में बने रहो। गुरुदेव, तनाव से मुक्त होने का क्या तरीका हो सकता है? वो तो बहुत, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग का सारा कोर्स इसीलिए बना है, तनाव से मुक्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और आपके व्यक्तित्व ऐसे हो जाए चमकता हुआ, वो सब हो जाता है उसमें। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है, जो आपके लिए है, कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फैमिली लाइफ और प्रोफेशन? क्योंकि आज की यंग जनरेशन इस डिलेमा में है। अच्छा, साइकिल में कौन सी पहिया इम्पोर्टेंट बोलोगे तो क्या बोलो? सर, दोनों। दोनों इम्पोर्टेंट पहिया। प्रोफेशन में भी ध्यान दो, अपने घर में भी ध्यान दो। आप नहीं, इधर है मेरे पास, आप चिंता नहीं करिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अभी के लाइफ में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में? क्या क्या सेटिस्फैक्शन? सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ। Real spiritual growth brings success, and it brings satisfaction also. What do you call as success? You know, when you find something that is little above your capacity, आप अपनी शक्ति से ऊपर कुछ हासिल करते हो, प्राप्त करते हो, बोलते हो ये सक्सेस मिल गया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैं सक्सेसफुली ये बॉटल उठा लिया हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल था, बाएं हाथ का खेल। जो आसान है उस पे सक्सेस का तुम कभी नहीं वो गर्व करोगे, नहीं करो, करते हो क्या? मैंने सक्सेसफुली फोन डायल कर लिया जी, थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा, यदि हम कहें आज मैं सक्सेसफुली 50 किलो वजन उठाया, क्या तब? क्यों? हम सोचते थे हम 50 किलो कभी उठा नहीं सकते हैं, आज उठाया तो सक्सेस का क्लेम कर सकता हूं। अपनी योग्यता को हम नजरअंदाजा कर लेते हैं या कम मानते हैं, तो हम सक्सेस पर प्राइड लेते हैं। जरा झांक के आपके भीतर देखो तो सही, आपके भीतर इससे ज्यादा पोटेंशियल है। तब जो भी आप सक्सेस समझते हो वो कुछ भी नहीं है। क्या? Got it? So if someone says I'm very successful person, I would say so ignorant person. Is so ignorant of his own potential. So you claim success for some small things. Is it shocking? नहीं गुरुदेव, लगता है सही कह रहे हैं आप। गुरुदेव, importance of spirituality in present day scenario and impact of social media on spirituality, because अभी all of us are on this verge of living in the social media with our phones on. देखिए, there is no going back from social media. उसको जुडिशियसली यूज करो ना। सोशल मीडिया से पीछे नहीं हट सकते हैं, मगर ये नहीं, तुम यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एंगेज इन इट एवरी डे। जब 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 हो सकता उसको यूज करिए। अब क्या है, एक प्रेशर हो जाता है और इतने मैसेजेस आए, आई हैव टू रिप्लाई टू देम अदरवाइज दे विल फील बैड। ये सब दिमाग से हटा दो। इफ समवन इज फील्स बैड, लेट देम फील बैड, एटलीस्ट यू डोंट start feeling bad because you have so much pressure of social media. Got it? You have to be little bit numb towards it. You know, messages you can't. When you get so many, say you get 100 messages, 200, even more messages per day. All your time will go just reading the messages. You know, so you don't have to feel the pressure of social media. Don't let that happen. Which then you keep a holiday for social media. So maybe you choose a day. On this day, I'm not going to look into social media. You will feel big relief. आपको लगेगा क्या रे, वाह, कुछ फ्रीडम आ गया।
at any cost save your mind. This is very important. क्या आइडिया ठीक लग रहा है? Gurudev, in modern era, can we actually live a pure spiritual life? अच्छा, अब स्पिरिचुअल लाइफ माने क्या समझते? कोई आसमान से गिरेगा? हाँ? भाई स्पिरिचुअल लाइफ यही है, आप इतना जानते हो कि मैं विशाल हूँ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ. देयर इज समथिंग बिग इनसाइड ऑफ मी. मेरे भीतर एक शक्ति है, ऊर्जा है, वो इन सबसे परे है. ये जानना. दूसरी बात है क्या है? जो आप दूसरे आपके साथ ना करें वो आप उनको ना कर दी, किसी और को ना करें. ये स्पिरिचुअल है. आप नहीं चाहते कोई और आपको दुख पहुंचाए, आप निश्चय कर लो हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे. मगर उसके बावजूद भी कोई दुखी हो जाए, उसके आप जिम्मेदार नहीं हो. क्या हम सबको खुश नहीं कर सकते? मगर हम अपना जानबूझ के किसी को दुख नहीं पहुंचाए, इतना ही. अच्छा, तीसरी बात क्या है? ऊर्जा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, करुणा रखेंगे सबके प्रति, स्नेह रखेंगे, ममता रखेंगे. ये सब स्पिरिचुअल लाइफ का अंग है. प्रसन्न रहेंगे और बीच बीच में अपने आप को याद दिलाएंगे, हम यहाँ तो ट्रांजिट लॉन्च में हैं, यहाँ से तो एक दिन जाएंगे हम सबको. जीवन का मूलभूत सत्य पर नजर डालना ही आध्यात्मिक जीवन है. मूलभूत जीवन, मूलभूत सत्य क्या है? हम सब मरने वाले. आज आप तो डॉक्टर्स हो, आप रोज रोज देखोगे कितने लोग मरते हुए. बाकी लोग तो इतने इससे अवगत नहीं होंगे जितने आप लोग होंगे. हाँ? एक तो लोग जो क्रेमेटोरियम में, स्मशान में काम करते हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं जो अधिक से अधिक लोगों को मरते हुए देखेंगे. स्मशान वाले तो सिर्फ मरते हुए देखने वाले, आप बच्चा पैदा होते हुए भी देखेंगे. आदि अंत दोनों आप देखोगे. अपना भी आदि अंत का याद करो. ये स्पिरिचुअल लाइफ है. क्या आप दुनिया में अभी कुछ साल से तो आए हो? हर बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन तुम अपना याद करो. तुम्हारा क्या अभी 25 साल हो गया? 25 साल पहले मैं इस दुनिया में आया. जब हम आए हम क्या थे, कितने थे? उससे पहले हम रहे कहाँ? हम थे क्या? इसका एक प्रश्न भर उत्तर नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, कोई हर्ज नहीं. यह प्रश्न ही जीवन को एक बड़ा आयाम दे देता है, डायमेंशन दे देगा, एक रेफरेंस पॉइंट दे देगा जीवन को. वही अध्यात्म, वही स्पिरिचुअल लाइफ है. सीइंग लाइफ फ्रॉम ए बिगर कॉन्टेक्स्ट. हमारे देखते देखते कितने लोग मर गए, ऐसे हम भी मरने वाले भाई एक दिन. फिर क्या होगा? मैं कौन हूं? कभी कभार तो बैठ के सोच के 5 मिनट, मैं कौन हूं? मैं तो शरीर नहीं हूं, बुद्धि, मैं शरीर भी हूं, सिर्फ शरीर हूं, शरीर ही नहीं हूं, मैं कौन हूं? इस तरह से सेल्फ इंक्वायरी, तर्कबद्ध तरीके से जीवन को जानना ही आध्यात्मिक जीवन है. हाँ, ये आपकी व्यावहारिक जीवन का विरोध में बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना? इसके लिए देखो, इतना मैं कौन हूं पूछने के लिए सब छोड़ छाड़ के हिमालय भागने की जरूरत नहीं है. समझ रहे ना? रहते हुए, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने आप में. कि महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को ये ज्ञान दिया. श्री राम जी भी बहुत उदास हो गए थे. तब वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दिया. बोले कि भाई, ये योग वशिष्ठ नाम से है, आपने सुना होगा कुछ मूवीज आए, इंसेप्शन. कितने लोग इंसेप्शन देखे हो इधर? कितने लोग मैट्रिक्स देखा है? मैट्रिक्स कितने लोगों ने नहीं देखा है?
कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या बात, मामला क्या है? Can you all understand Hindi? How many cannot understand Hindi here? सब हिंदी समझते ही हैं. These movies are made on the basis of योग वशिष्ठ. योग वशिष्ठ हमारा देश का विरासत है, किताब है. इसके ऊपर विदेश में इन लोगों ने मूवी बनाया. हम अपना ये सब कोई पढ़ता ही नहीं होता, सिर्फ रामायण ही पढ़ते हैं बस. वो भी कितने लोगों को पता नहीं कंस रामायण में है कि महाभारत में. गुरुदेव कंस तो महाभारत में ही थे. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अलग अलग फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस में आई है कि हाउ टू कीप द माइंडसेट राइट व्हेन नथिंग गोज एज पर विश और इफ समबडी इज ट्राइंग टू डोमिनेट यू. Yeah. First of all, don't let anybody dominate you. Number one. That is because you feel vulnerable. When you feel vulnerable, pranayama and meditation, yoga will tremendously help you. Number one. और ये जो आप बोल रहे, when everything goes wrong, it is impossible. हम क्या करते हैं, जब भी कोई समस्या आती है इसको एटर्नलाइज कर देते हैं और जनरलाइज करते हैं. लोग बीमार, अरे ये सब लोग बीमार पड़ गए जोधपुर में, सभी लोग बीमार पड़ गए और सबको सर्दी हो रखा है. सबको सर्दी हो रखा है क्या? हम कोई भी समस्या आती है तो एटर्नल, वो हम हमेशा गलती कर बैठे. अरे भाई हमेशा कैसे गलती करोगे? खाना खान पे तो थोड़ी ना लाइक मुंह में तो डाला हुआ, वो तो सही कर रहे हो कि नहीं? भोजन उठा के कान में लगाते हो क्या? भोजन मुंह में ही रखते हो. ये एक्ट सही है कि गलत है? फिर हम कहते हैं हम सब हमेशा हम गलत कर बैठते हैं. ये पहले ये एटर्नलाइज करना, जनरलाइज करना छोड़ दो. और आपका कितने बार आप अच्छा काम किया उसको याद करो, हमेशा नेगेटिव ही याद मत क्यों सोचते हो? क्या? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. हमेशा रॉन्ग करते हैं, हमेशा रॉन्ग डिसीजन, ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना हो तो अगेन मेडिटेशन विल हेल्प यू. स्पिरिचुअलिटी और साधना, योग एंड मेडिटेशन क्या है, ये आपको मदद करेगा. जो आप सोचते हो वो काम होने लगे. ठीक है जी गुरुदेव. Gurudev, we have some rapid fire questions. Okay, go ahead. Valentine. Huh? Valentine. Valentine. Make the planet your Valentine. Care for our planet. Soulmate. Meet your soul. Then your soulmate will come running to you. Heartbreak. We will repair it for you. Challenge. Challenge. Challenge shows your youth. Take it. Relationship. Make it good for them. Make it better. Intuition. Explore it. Drugs. Be decent in it. Parents. Respect them, understand them. Good friends. Be one of them. Patience. Got it? Thank you, Gurudev. Thank you so much, Gurudev. Taking program forward as we step into the collaborative journey between AIMS Jodhpur and Sri Sri Institute of Advanced Research, I invite Professor Pankaj Bharadwaj, who coordinate the
and facilitate the memorandum of understanding between our esteemed institutions. Thank you. प्रयासों को जारी रखते हुए एम्स जोधपुर वेद विज्ञान महाविद्यापीठ की अनुसंधान शाखा श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च के साथ इस साझेदारी को भविष्य में जारी रखने के लिए उत्साहित है। आज गुरुदेव की गरिमामयी उपस्थिति में एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस अग्रवाल और डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर एवं श्री श्री इंस्टीट्यूट की ओर से श्री कृष्णा शास्त्री जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तावेजों का आदान प्रदान करेंगे और इस साझेदारी का उद्देश्य एकीकृत चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ध्यान, वैदिक जप और समग्र चिकित्सा में संयुक्त रूप से काम करना है। आइए आमंत्रित करते हैं एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर एवं श्री श्री इंस्टीट्यूट की ओर से श्री कृष्णा शास्त्री जी को कि वो मंच पर आएं और गुरुदेव की गरिमामयी उपस्थिति में MOU का आदान प्रदान करें। प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और श्री कृष्णा शास्त्री जी। सभी उपस्थित अतिथियों से निवेदन कि तेज ध्वनि में इस मूवमेंट का, इस क्षण का उल्लास से स्वागत करें। धन्यवाद सर। As a token of heartfelt appreciation, I request the President of the Institute, Dr. Agrawal, and our esteemed Executive Director, Dr. Kar, to present a memento to Gurudev for the wisdom, inspiration, and profound teachings graciously shared with us. Thank you, sir. With His divine grace, I stand before all of you with heart full of gratitude and spirit uplifted by the warmth and positivity that has enveloped us in this spiritual gathering. Thank you, Gurudev. Thank you for guiding us through this spiritual journey. Your wisdom, teachings, and the peaceful energy you have shared with us today have been truly enlightening and comforting. I want to extend sincere gratitude to our institutional heads, Executive Director,
Dr. Carr and President Dr. Agrawal for guiding us and providing all the support all the way. I thank each individual who played a role in organizing this event. Heartfelt gratitude to Dr. Kirti Chaudhary for her wholehearted commitment and efforts that have been driving force behind. Thank you to all who have taken their time off from their busy schedule and have been here. Please join us for refreshments outside. Thank you.